Your Holiness, I think firstly I'd like to commend you on the excellent speech you made today. And you covered a number of issues. And as I said to you after your speech, that you were talking from the heart, and I commend you for making such an excellent speech. Now, here in this country, the total population Muslim is about 2.6 million. And what you have said was music to my ear, stressing the importance of education. Very, very important. You talked about peace, you talked about harmony, and you talked about humility, which is very, very important. मेरे वालिद साहब कहते हैं जदों दरख्त नूं फल लगदा है उहदी टहनियां नीचे चली जांदियां. And I have read your works, and obviously you talk about humility, and you talk about empowerment of this lady. We talked about empowerment of women and engagement with the young. Acha. Now, what I try to do in this country is to build harmony, and Rami Ranger Sahib and I are involved in preaching harmony. I'm not talking about harmony amongst the Abrahamic religion, but a harmony amongst the Muslims, the Sikhs, for example. The Golden Temple Foundation was laid by Mian Mir in the writings of Sheikh Farid. And of course, if you look at similarity between Islam and Hinduism, there are so many similarities. The problem I'd like to issue, I think we must talk about, is a question of terrorism, extremism, which is prevalent in this country and worldwide. And what I'm going to ask you, Your Holiness, obviously it is a problem. It's affecting this country, and of course some of it is coming over from other countries as well. We got problems in North Africa. We got problems, you referred to problems in Syria. And wherever I can, I try to say about the Muslim perspective, for example. You know, I mean, I was talking about what Surah Nisa says about inheritance of properties, about forced marriages, about rape should not be used as a weapon of war. But the point I like to raise with you, Your Holiness, is this question of the young. How do we get this message across to the young about Islam? Following the true message of Islam, for example, Islam forbids suicide bombing, for example. It's written in the Quran, you kill one person, you kill the whole humanity. You save one person, you save the whole humanity. What is your suggestion about tackling this problem of extremism and terrorism? That's the question I'd like to ask you, sir. ये तो उनको सवाल मैंने बता दिया है कि घर बैठे औरत तरबियत करे माँ बच्चों की, और ऐसी जनरेशन निकाले. ये एक दिन का काम नहीं है कि ओवरनाइट आप चेंज ले आएंगे. ये तो सारे माहौल में बैठ के बच्चे जो सीख रहे हैं वही है ना. तो अपने बच्चों को, माँ बाप को वक्त देना चाहिए बच्चों को, उनसे अटैच करें, उनको बताएं अपनी ट्रेडिशंस, बताएं अपने क्या आपके ट्रेडिशंस हैं, क्या आपकी तालीम है, क्या टीचिंग है, क्या इंसानियत है. और ये जो सारी कुछ हो रहा है ये फ्रस्ट्रेशन के लिए हो रहा है. फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है ना. एक अंग्रेज़ है बच्चा, वो मुसलमान होता है और वो उसको बड़े सबज़ बाग दिखाए जाते हैं. घर में उसको पता है ये हो सकता है वो सिंगल पेरेंट का बच्चे हों अक्सर जो अंग्रेज़ मुसलमान हो जाते हैं. घर में कुछ मिला नहीं उनको सुकून, यहाँ आते हैं, यहाँ उनको बड़ा आवभगत होती है और उसको ऐसे सबज़ बाग दिखाए जाते हैं, उसको मिसमराइज ही कर दिया जाता है एक लिहाज से. फिर उसको पाकिस्तान भेज देते हैं. और यहाँ जो 3-4 लड़के पकड़े हैं, तस्वीरें आ रही थी, उनमें एक अंग्रेज़ था, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आया कि यहाँ जी टेररिस्ट अटैक करना था. तो ये चीज़ें तो बड़ा लंबा अरसा चाहती हैं तरबियत के लिए. तो हम इसीलिए तो कोशिश करते हैं जमात में, इसलिए बच्चों के लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है ताकि तरबियत हो. उसके बावजूद कई बिगड़ जाते हैं. नौजवानों के लेवल पे तरबियत के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इसलिए कि अटैचमेंट रहे कुछ ना कुछ दीन के साथ. कुछ उनकी फ्रस्ट्रेशंस किस तरह दूर की जा सकती हैं, किस तरह उनको गाइड किया जा सकता है. तो ये तो एक पूरे आपके माहौल को एक मुहिम चला के, एक कैंपेन करके इसको एक से इस तरह लाना होगा. इस्लाम की असल खूबसूरत तस्वीर को बताना होगा, सामने रखना होगा. अभी तो इस्लाम यही है ना कि आप घर में तो लोग को कुरान भी नहीं पढ़ना आता सही तरह, इसलिए वो मस्जिद में भेज देते हैं कुरान पढ़ के आओ. और वो जो गरीब है, जो गरीब मुल्क है हमारे, वो तो इस तरह ही है ना,
وہ کہتے ہیں چلو روٹی کا خرچہ کم ہوگا, اس کو مدرسے بھیج دو. اس لیے لاکھوں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, اور وہ مدرسے والے اپنے ان کے بیسٹ انٹرسٹ ہیں. کسی نے لکھا تھا نا کہ جتنے بڑے مولوی ہیں ان کے اپنے بچے کیوں نہیں سوئسائڈ بام میں حصہ لیتے, یہ غریبوں کے بچے کیوں سارے شامل ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ ان کی جو بیچارے ایسے لوگ ہیں جن کے بچے گھروں میں صحیح طرح نہیں پلتے, وہ بھیج دیتے ہیں, وہ پھر ان کے ساتھ مولوی جس طرح مرضی سلوک کرے. تو یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے, ایک تو مہم کی صورت میں سارے معاشرے کو, ساری سوسائٹی کو چلانا ہوگا. 2.6 ملین جو مسلمان ہیں ان کو مسلمان بن کے رہنا ہوگا نا, پھر ہی چینج آئے گا نا. بڑی امپورٹنٹ ہے. اب گھر میں دیکھ لیں, اب خود اس کا تجربہ ہوگا. یہ کئی لوگ بتا چکے ہیں ہمارے کہ جی ہم نے آزادی اپنے بچے کو دی, وہ گو کہ اس میں ایک ایکسٹریم تک نہیں بھی بچے گئے, لیکن ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جی شادی بھی ہم اپنی مرضی سے کریں گے, یہ کام بھی اپنی مرضی سے کریں گے, اور اس کی وجہ سے لمبا عرصہ چلا جاتا ہے. پھر پیرنٹس جو ہیں متاثر ہوتے ہیں. اس سوسائٹی میں رہ کے تو اپنے ٹریڈیشنز کو بچانا بھی ضروری ہے, اور صرف ٹریڈیشنز نہیں, تعلیم کو. اور تعلیم تو خود جب تک آئے گی نہیں والدین کو, پیرنٹس کو, اس وقت تک بچے کو کیا سکھائیں گے. تو یہ مسلمان ہونا تو کوئی کرائٹیریا نہیں نا ہے. اصل تو چیز یہ ہے کہ آپ کتنے کوشش سے اپنے بچوں میں اسلام کو, صحیح اسلام کو پھیلا رہے ہیں. وہ اسلام نہیں, اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, یہ کہتے ہیں قتل کر دو. اپنی مثال دی, ایک شخص کا قتل انسانیت کا قتل ہے.